हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम मैराथन सेशन करने वाले हैं जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन, okay, so green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of what? Photosynthesis. All the energy required for the life process is obtained by dash of some macromolecules. All the energy required for life processes is obtained by dash of some macromolecules that we call food. So all the energy required for life processes is obtained by photosynthesis, by breakdown of some macromolecules that we call food. See, all energy required for life processes is obtained by oxidation of some macromolecules that we call food. So that's what respiration is. Energy currency of cell is ATP. So let me write at the same time so that you can understand. For gaseous exchange of plants, dash and dash in their leaves and stems respectively. Leaves में होता है stomata और stems में होता है lenticels. This is given in your NCERT. So for gaseous exchange, plants have dash and dash in their leaves, stomata in leaves, and lenticels in stem. Complete the given biochemical reaction. Okay. C6H12O6 plus 6 oxygen can give rise to, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे? 6 वाटर मॉलिक्यूल्स. कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड. और आपको कुछ और भी मिलेगा, दैट इज़ एनर्जी. So these three things are required. Another thing is traditional respiration. Okay, give examples of obligate anaerobes. Obligate anaerobes means that only require, that do not require. Obligate means that can survive in the presence or absence of oxygen. Okay, that can survive in presence and absence of oxygen, that is obligate anaerobes. They can survive in presence and absence. So what is that example? So example of obligate anaerobes is Clostridium tetani, which causes Clostridium. Facultative anaerobes. Facultative anaerobes is yeast. Facultative anaerobe is yeast. So yeast is facultative anaerobe. Facultative anaerobe is yeast. Facultative means, okay, 1 minute, I said it wrong. Obligate means what? Obligate means that can survive only if oxygen is not there. If oxygen is there, then they will die. That is Clostridium. Another is facultative means in the absence or presence of oxygen they can survive. So there's a question for you. Facultative moneron. So find the answer and comment in the section. By now I will say the answer. The answer is mycoplasma. They are the organisms, monerons, which can survive in the presence of oxygen and also in the absence of oxygen they can survive. Mycoplasma are aerobes as well as anaerobes. So I can say they are facultative anaerobes. Okay, can survive without oxygen also. Facultative aerobes, not anaerobes. Facultative aerobes, they can survive without oxygen also. Facultative aerobes are mycoplasma. The smaller living cells, they do not have any cell wall, they lack a cell wall. So another question is, traditionally respiration is dash process. So we say that it is a catabolic process, but by the end of the chapter we'll say that it is a amphibolic pathway. Common pathway for both aerobic and anaerobic respiration is glycolysis. Let's go for white color. Let's see how it works. It's not working.
Okay. So it's glycolysis. Let's see the next question. Enzyme that acts on sucrose. Enzyme that acts on sucrose and break down it into glucose and fructose is invertase. What is that enzyme? Invertase. In Oh, it's coming black. Let's go for red only or green. Okay. Invertase. Something is wrong with all these colors. Invertase. Okay. Next question. Number of irreversible reactions in glycolysis. Number of irreversible reactions in glycolysis. First, let me say the pathway of glycolysis. Glucose converts into glucose 6-phosphate by the enzyme hexokinase by taking 1 ATP. Glucose converts into fructose 6-phosphate by phosphohexoisomerase. Fructose 6-phosphate converts into fructose 1,6 bisphosphate by phosphofructokinase. Then by taking ATP, then fructose 1,6 bisphosphate converts into triose phosphate, that is also called glyceraldehyde triphosphate PAGL, and which isomerizes into triose phosphate dihydroxyacetone phosphate. This DAP converts into PAGL, and PAGL PAGL converts into triose bisphosphate. Triose bisphosphate by reducing NAD plus to NADH plus H plus. Reducing NAD plus to NAD plus. Okay. So then triose bisphosphate, it converts into triose phosphate, that is 1,3 bis PGA converts into 2 PGA. This 2 PGA by substrate level phosphorylation by releasing 1 ATP for 2 molecules, then 2 ATPs. Then triose phosphate, it converts into, that is 3 PGA converts into 2 PGA by phosphoglyceromutase. Then it converts into phosphoglycerate. Then it converts into phosphoglycerate by mutase. Then it converts into PEP. PEP is involved in primary carbon dioxide acceptor in C4 plants. So phosphoenol pyruvate, it converts into pyruvic acid by pyruvic kinase enzyme. So what it is asking? It is asking in question that okay, it is asking what? It is asking irreversible reactions. So first we have seen that wherever double arrow marks are there in NCERT, that those processes are irreversible. So if you see first reaction, glucose is converted to glucose 6-phosphate. Okay, irreversible means that cannot occur. Reversible means that is having double-headed arrows. They are reversible, like PAGL into DAP and DAP into PAGL, that is reversible. Irreversible is glucose. First step, glucose once converted to glucose 6-phosphate, ATP is involved. Then if you see third step, where glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate converts into fructose 1,6 bisphosphate. And then 10th step, if you see, PEP is converted into pyruvic acid, wherever ATP is involved. But where ATP is formed, that not that. Then what is the correct thing? That is substrate level phosphorylation of glycolysis. So first step, third step, and 10th step, these are irreversible steps. Reducing equivalents removed is catalyzed by enzyme. Reduced equivalent removed from GA3P means PAGL. 3 PGA are accepted by what? NAD are accepted by what? NAD, right? NAD plus. Reduce equivalents reduce कौन होता है? हाइड्रोजन is accepted by NAD. ये तो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, सिंपल. Okay, next,
यहाँ पे क्वेश्चन स्किप हो गया. नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस. सबस्ट्रेट लेवल हो रहा है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस. तो कितने सबस्ट्रेट लेवल होते हैं, मतलब कितने बार कहाँ कहाँ एटीपी बना है. एटीपी कहाँ 2 स्टेप्स में बना है, 2 एटीपी बना है. मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए 2 बना है. 2 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, 2 मॉलिक्यूल के लिए 4 एटीपी. अब ये 4 एटीपीस मिला है. दूसरी बात कि ये 4 एटीपीस मिला है, दैट्स ओके. कितने स्टेप्स हुए हैं वो पूछ रहे हैं, राइट. स्टेप्स कितने हुए हैं, तो कौन से हैं वो. जब 1,3 20 पीजीए 1,3 20 पीजीए किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3 20 पीजीए 3 पीजीए में कन्वर्ट हो रहा है. ये स्टेप, ये कौन सा स्टेप था, 6th स्टेप. और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है कि जब पीपी फॉस्फेनॉल पायरुवेट जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एक एटीपी रिलीज होता है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट है तो वो निकल जाता है. ओके. एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी मैं, आई डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग फॉर यू. सो यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि जो इंसर्ट में एक लाइन है कि 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट्स आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम पागल एंड ट्रांसफर टू NAD+. जब आप कन्वर्शन देख रहे हो 1 पागल से मीन्स टाइवर्स फॉस्फेट या ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 2 ट्रायोस बिस फॉस्फेट में कन्वर्शन जो देख रहे हो उसमें क्या होता है, उसमें अपना जो पागल इज़ कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस पीजीए. तो पागल में सिर्फ एक फॉस्फोरस है, पागल में सिर्फ एक फॉस्फोरस है. जिस पागल का एक फॉस्फोरस, पागल में एक फॉस्फोरस है, इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस पीजीए. हाउ इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल कि जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है रिएक्शन में. ओके, दिस समहाउ पॉसिबल. अनदर थिंग इज यहाँ पे डिहाइड्रोजनेस होता है. ओके. सो अभी बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, लेकिन अभी हम ये पेज के क्वेश्चंस कम से कम कंप्लीट करते हैं. तो रेट लिमिटिंग स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस इज कैटलाइज्ड बाय रेट लिमिटिंग स्टेप. रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है और कौन कैटलाइज करता है ये जानते हैं. तो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है बोल तो जो पीपी है वो कन्वर्ट हो रहा है फॉस्फो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. पायरुविक एसिड पी में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये कौन कैटलाइज करता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस. सॉरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पूछा है ना, रेट लिमिटिंग स्टेप पूछा है. तो रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है बोल तो जब फॉस्फो ग्लूकोज 6 phosphate is converted into glucose 1,6 phosphate. That is what is the rate limiting step. So this you need to remember, this is important, that when fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 bisphosphate. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, so इसमें क्या होता है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है. ओके. द रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस इन विच CC बॉन्ड ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ब्रोकन इज कैटलाइज्ड बाय CC बॉन्ड ब्रोक हो रहा है. इसका मतलब आपका जो फ्रक्टोस जो 6 कार्बन का था वो 3 कार्बन में टूट जा रहा है. किस में हो रहा है वो, जब आपका फ्रक्टोस 1,6 बिस फॉस्फेट ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. Triose phosphate is in equilibrium with like reversible reaction with DAP, triose phosphate dihydroxyacetone phosphate. ओके. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फॉर दिस CC बॉन्ड क्लीवेज क्या इन्वॉल्व होता है, aldolase, catalyzed by aldolase. Which enzyme, aldolase. Which enzyme, aldolase. So the reaction glycolysis in which CC bond of respiratory substrate is broken is catalyzed by aldolase. कौन सा एंजाइम है ये, aldolase.
तो इसका मतलब ये दो में इन्वॉल्व हो रहा है. Allulase enzyme is involving in both respiration and photosynthesis. Okay. Next question. Most of the oh my god. एक क्वेश्चन मिस हो गया. फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम ग्लाइकोलाइसिस डैश एक्ट एज कोफैक्टर. तो रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेसिस में एक ही सब वो होता है कोफैक्टर Mg+2. मैगी को याद रखना, Mg+2 को मैगी बोलते हैं. अगर आपने वो मिनरल न्यूट्रिशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जस्ट गो एंड वॉच देयर. देयर सो मेनी ट्रिक्स. सो द मोस्ट ऑफ द energy produced during oxidation of glucose in presence of oxygen is released as heat. तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होती ग्लाइकोलाइसिस में बिकॉज यहाँ पे हीट के फॉर्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है. नंबर ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शंस इन ग्लाइकोलाइसिस. तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन फर्स्ट वाला रिएक्शन तो जहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट उसमें कन्वर्ट हो रहा है, और एक है 3PGA 2PGA. नहीं वो तो म्यूटेज है. सो यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं. एक तो अपना कौन सा स्टेप, आइसोमराइजेशन पूछा है ना. आइसोमराइजेशन में एक तो है कि जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. सो दिस इज़ द आइसोमराइजेशन रिएक्शन जहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है. दैट इज़ आइसोमराइजेशन. 6 कार्बन से जहाँ पे सेम नंबर ऑफ कार्बन से वो आइसोमराइजेशन. सो ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ आइसोमराइजेशन. अनदर इज पागल और ढैप एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो एक है. और तीसरा है 3PGA 2PGA में कन्वर्ट हो रहा है बाय म्यूटेज. तो तीन है ये. ओके, नेक्स्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर योर टाइम. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब.